Hi guys, welcome to Motor Maniacs. This is Akshay. And guys, as you know, recently हमने ये Continental GT 650 purchase किया था. And the biggest problem straight away that we found in the bike was बहुत ज़्यादा भारी है bike. जो stock bike है, it is too heavy. It feels bulky even on the standstill. And चलो जब चलाते हैं तब तो bulk इसका feel होता ही है. तो जो main culprit है इस चीज़ का, according to me, is the super heavy exhaust. अगर हम दोनों एग्जॉस्ट का वेट चेक करते हैं गाइज, स्टॉक बाइक के अंदर जो दोनों साइड एग्जॉस्ट आते हैं, इट इज़ 20 एंड बिटवीन 20 एंड 21 किलोज, विच इज़ लाइक अ बिग हेफ्ट. सो वो इसकी हैंडलिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, इसकी ब्रेकिंग को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, और इसकी जो ट्रैफिक की मनूवरेबिलिटी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, बिकॉज वो बहुत बाहर स्टिक होता है. सो अगर आप फिल्टरिंग कर रहे हैं बीच में ट्रैफिक के अंदर, सो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस. सो to solve that, we finally got this we've got this AEW exhaust, which is a 2-in-1. So the reason I've gone for a 2-in-1 is to make the bike as light as possible, because the 2-in-1, अगर आपने recently Bear 650 रॉयल एनफील्ड की जो बाइक आई थी उसमें आपने 2-in-1 एग्जॉस्ट देखा होगा. The solution that we are trying to achieve is to make the bike lighter. So 2-in-1 is the best thing for that, because 2-in-2 is going to be slightly heavier even compared to this. So अब AEW जो है guys, this is a Pune based brand जिन्होंने if you want to get this exhaust from them, they've been doing business for a long time. This might not be available on their website, but you can order this exhaust by calling the number that's available on the website. They make this exhaust on order because of course for obvious reasons India के अंदर 2-in-1 exhaust की demand थोड़ी कम है, so they make it on order. So guys, this exhaust is weighing between 6.5 kilos. So there has been approximately a weight saving of around 14 to 15 kilos. अब सुनने में इतना नहीं लगेगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड द बाइक. जो हैंडलिंग है बाइक की, इट इज़ वेरी इजी टू टर्न इन नाउ. इट टर्न्स इन क्विकर देन बिफोर. The braking has improved because it's carrying less weight. Then also, surprisingly, the traffic maneuverability of the bike has increased so much now, because now you can filter, because जो पहले एग्जॉस्ट थे वो बाहर स्टिक आउट करते थे, so you don't have confidence while you were maneuvering your bike in traffic. And also while maneuvering, जब हम maneuver करते traffic के अंदर, the bike felt heavy, it felt bulky, and this is a really has been a great solution to that. The other thing is guys, what I really like about this particular AEW exhaust is that it's really simple. इसके अंदर कोई घी मसाला कुछ ऐसा कुछ नहीं है. इसकी जो लुक है बहुत ही ज़्यादा क्लासी, सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल लुक है. ये ऐसी लुक है जैसे एक रेगुलर आपका कोई मैन्युफैक्चरर जैसे फैक्ट्री से कोई एग्जॉस्ट बना के भेजेगा, उस टाइप की लुक है. बहुत ही सिंपल है, बहुत क्लासी सॉर्ट ऑफ लुक है. सिंगल वॉल्ड है, विच इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट आई लाइक. रेगुलर जो एग्जॉस्ट है, इट इज़ डबल वॉल्ड, क्योंकि उसके अंदर वो क्रोम की फिनिश उन्होंने मेंटेन करनी है. बिकॉज दिस इज सिंगल वॉल्ड, दिस कीप्स changing colors, because जैसे जैसे heat, you can see how the heat is traveling through the exhaust. You can see how it is discolored. So I like that sort of honesty in the exhaust, and it's also lighter because it's single walled. और एक जो चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो ब्रांडिंग रखी है बहुत ही सटल रखी है, विच इज़ वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट द एग्जॉस्ट, इज़ कि बहुत ज़्यादा लाउड ब्रांडिंग नहीं है, जो बहुत सारे दूसरे एग्जॉस्ट ऑप्शंस के अंदर है, कि जिसके अंदर उन्होंने नाम बहुत बड़ा बहुत ही ज़्यादा गौड़ी तरीके से लिखा हुआ है. लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ रियली सटल लुक. I believe India के अंदर guys, AEW is doing a great job. They're providing really good quality products compared to stuff that was available overseas, which is really good quality stuff, but kind of expensive. And even if we ignore the expense, the complication of getting those sort of parts in India, यहाँ मंगवाना थोड़ा complicated हो जाता है कुछ बार, but AEW is providing a good solution to that. So guys, another thing that I would like to bring up, I fitted it with the baffle. So this came with a baffle. जब हमने बाइक जब exhaust purchase किया था, that baffle still was a bit too loud for my liking and for maybe the liking of the traffic police in Chandigarh. So I've recently got another baffle from AEW. They helped me out on that as well. मैंने उनको बोला था कि
थोड़ा और क्वाइटर baffle चाहिए. They sent me over another baffle जो थोड़ा और ज़्यादा quiet है. I'll give you the sound of the bike now. On idle, I would like to say it is almost like the stock exhaust. It's only when you rev it, जब हम उसको rev करते हैं तब थोड़ा sound आता है. It's really smooth and it's really quiet right now in terms of अगर हम traffic की बात करते हैं guys, this is not gonna make somebody angry. So अगर हम 2x2 की बात करते हैं guys, this of course has got less bass. जो 2x2 की sound है वो it's a little more bass heavy. This is the sort of sound that I like more, and you can see it's only when you rev it that it gets a bit loud, but otherwise on idle it's almost like the stock exhaust, which is to my liking. I really don't want to bother the cops right now. So guys, a great solution if you want to make your bike lighter. Really has changed the dynamics of the bike and really has transformed the handling of the bike, and we're really happy with it. So guys, thanks for watching the video. Like and share the video with your friends who've got a GT650 or an Interceptor 650, and subscribe to the channel. Thanks for watching guys.